सो करण, एट द स्टार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप मुझे तुमसे बहुत सारी कंप्लेंट्स होती थी कि तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करते, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है तुम मुझे बताते नहीं हो, तुम कुछ रोमांटिक जेस्चर्स नहीं करते। मैं तुमसे पूछती हूँ दिन में क्या हुआ, तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, तो तुम्हारा जवाब 1 2 3 ऐसे ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ड में खत्म हो जाता था कि हाँ आई एम ओके, नो प्रॉब्लम, यस एवरीथिंग वाज गुड, यस एवरीथिंग वाज गुड। So I used to constantly keep thinking that, oh my god, I am stuck with an emotionally unavailable man. Why were you emotionally so closed off at that point of time? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शो। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारी औरतों का क्वेश्चन होगा कि बिकॉज द टाइम वी आर डूइंग कॉल्स वी ऑलवेज गेट दिस कंप्लेंट दैट आई हैव एन इमोशनली अनअवेलेबल हस्बैंड, आई हैव एन Yeah. इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर। मोस्ट ऑफ द men are not able to share the emotions that they feel. Most of the men are not able to understand that what they are feeling through. And I want to clarify that it was not easy for me to dig deeper inside me. It took a lot of work, but then there is a process to it which I would like to point out in 3 different levels. So before we deep dive into it, welcome to another episode of Happily Whatever After. And today we are going to cover the hot topic of how this beautiful, emotionally unavailable man became emotionally available to her. My EQ, which is the emotional quotient of my brain, got activated. How did that got activated? What did I do? Where did I dig deeper inside myself? So I found out that there are 3 stages in every man's life that they need to dig deeper into to understand where did they fail and why did they become like this? Why did they shed their emotions? Which part of their life actually made them do this? Yes. So the first phase is the childhood phase. Okay. Which is very very important. So I remember that कि मेरे childhood में I did not have anyone to talk to about my emotions. The way we were raised, this is also something that every man should look into it. It is very necessary that you dig deeper into your childhood because childhood gives you a lot of answers. I started understanding the patterns that I was bringing into the relationship of not communicating to you, of not giving you the emotional attachment and not telling you what I was feeling inside. I understood that as a child, I did not have anyone to talk to. I always suppressed my emotions. Yeah. And also one thing which I noticed when I was growing up is that कि जो attunement होता है parents के साथ, जो आपके parents या जो caregivers होते हैं, वो आपके साथ किस तरीके से बात करते हैं, वो आपको किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या वो आपके साथ डेली बैठते हैं, क्या वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, क्या आपको अटेंशन देते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम सोसाइटी में कैसा होता है कि लड़का अगर कोई है तो उसको पहले बात तो बाहर भेज दिया जाएगा खेलने कूदने के लिए, और अगर उसको हर्ट भी हुआ है तो वो बोल दिया जाएगा कि नो यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन. तो रोते नहीं है, दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़की है क्या. सो आई ऑल्सो वॉज रेज्ड इन द सेम सोसाइटी एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट एज अ चाइल्ड व्हेनेवर आई यूज्ड टू प्ले विद द किड्स ऑल्सो दे यूज्ड टू ऑलवेज से मी कि लड़की है क्या, रोता क्या है. दिस वाज द इम्पैक्ट दैट क्रिएटेड दैट men cannot cry, men cannot shape themselves to be emotionally available. बचपन में मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई. I started creating a timeline in my head that where did this happen, how did this happen, and I understood that there were a lot of connections in my brain which took me to childhood, and I used to always connect that कि मेरे childhood में ऐसे ही था तो सारे relationship ऐसे ही चलते हैं. तो जो मैंने देखा वो मैं अपने relationship में भी कर रहा था. Basically in childhood, if you are never connected to emotions or you choose only certain emotions that are allowed for boys, so you just stick to that, which is like anger, shouting. हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, यही 4-5 इमोशन. सैड है तो क्या करने, सैड है तो कुछ नहीं करने का, चुपचाप बैठने का, तो अपने इमोशन को अंदर ही रखने का, सल्व करने का, और अंदर जो चल रहा है फिर वो तुमको बाहर नहीं निकालना है. सो दिस वाज वन ऑफ द, क्योंकि बाहर कैसे निकालोगे तो लोग बोलेंगे लड़की है क्या, रो रहा है तू. सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई ऑब्जर्व्ड इनसाइड माय सेल्फ. Yes. तो शो बिफोर वी मूव टू स्टेज 2 आई वुड लाइक टू आल्सो टेल यू अबाउट द एज which is 0 to 7 years when you are a child, right? What happens is you are a sponge. Whatever emotions, how you are being raised, आपके घर का माहौल क्या है, क्या आपके घर में बातों को सप्रेस किया जाता है, क्या झगड़े होते हैं, अगर झगड़े होते हैं तो क्या उसके ऊपर बात की जाती है, किस तरीके से बात की जाती है. आपको अगर दिखता है कि इमोशंस का कोई जगह नहीं है, अगर आप अपने इमोशंस शेयर कर रहे हो तो उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, आपको आपसे उस बारे में बात नहीं किया जा रहा है. सो ऑल ऑफ दोज इमोशन फ्रॉम 0 to
7 years old, Yeah, a the child absorbs it, right? Yeah, And that is what technically starts happening into the marriage also. So whenever we used to fight or whatever used to happen between us, I used to always suppress, because I saw that ki suppressing emotions my mother used to suppress, because my mother and father used to fight and there was yeah. nothing amicably being discussed between them. Yeah. So for me, having a fight and suppressing emotions was the best thing. Yeah. That I had a coping mechanism Yeah, too. and I think this applies to all kids. Yeah. Like whether it's a girl or a boy, you have to be very, very aware as a parent Yeah. that what kind of home environment you're creating for your kids. Between the age of 0 to 7, kids are literally an extension of you. So Correct. if you create a chaotic home environment, if you are constantly fighting with your partner, the child absorbs that. The child sees that as his normal. Correct. That is the level of stress and anxiety he will always have stored in his body, stored in his cells. And there are scientific researches to prove that. There have been studies conducted where they realized कि बचपन में उन्होंने जिस लेवल का स्ट्रेस झेला था as kids between the age 0 to 7, their cell remembers that amount of stress and creates issues in their adult life, maybe in the form of emotional issues, maybe in the form of relationship issues, maybe in the form of chronic physical diseases as well. Yes. Let's go to the phase 2 of any man's life, which Yes. is the teenage phase. Of course. So teenage starts from 8 years to 16 years. Yes. Correct. Obviously it can go to 18 also. Yeah. The thing is that कि जैसे ही आप 7 years क्रॉस करते हो, you start, understanding things around you. You start understanding that how you should behave in the society. You are also being told what is good, what is bad. Everything you start adapting to the society. You start behaving in certain manner. Now, as you grow up, you have been told that कि आपको इस तरीके से behave करना है. So for me, it was very simple that because I did not have any emotions to be shared, I did not have any place to be shared, I was always suppressed. I used to always go out with my friends. अगर मुझे लगी भी है तो मैं घर पे जाके नहीं बताता था. In fact, there is this episode where I have done about how my childhood shaped, how your childhood impacts the whole journey of a man. Yeah. So that will also give you some perspective. You will find that link right here. Yeah. The emotions which I never used to get from emotionally unavailable parents, I used to channelize that कि ठीक है, नहीं available है तो नहीं available है. I will go out, play with my friends, I will enjoy my life, I will do whatever I'm supposed to do. And also, when you are growing up, the kind of family that you see, for me, it was very, very important to observe that I did not have an emotionally available father. Yeah. Whatever I saw, I adapted that. I was like कि relationships ऐसे ही होते हैं, आप अपने emotions share करना सही नहीं है. तो you always suppress them, you keep yourself side. You are now that person who will adapt to whatever situations are there in your life. जो भी आपके साथ में हो रहा है. So for an example with me, I saw my parents fighting, I saw my mother crying, and I did not have that space that कि मैं किसके साथ जाके share करूं, मैं किसको बोलूं that I am fearful, मैं किसको जाके बोलूं that कि अरे मुझे भी डर लग रहा है ये झगड़े से, कि what if some mom and dad कुछ हो जाए. But वो मुझे space नहीं मिली थी because they themselves were not available. Yeah. So where will those emotions come from? Then again what happened? I started suppressing those emotions within myself. Now coming to टीनेज, एज वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट कि आप टीनेज में होते हो, तो जो टीनेज में जब टाइम होता है आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है. बट फॉर मी व्हाट हैपेंड इज आई वाज बीइंग टोल्ड दैट कि आपको लिमिटेड पढ़ाई करनी है, आपको पैसे कमाने जाना है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज सपोज टू बी गिवन टू अ चाइल्ड व्हेन ही क्रॉसेस द एज ऑफ 22, 23, 24, व्हेन ही स्टेप्स आउट ऑफ द कॉलेज, गोज फॉर वर्किंग, आई वाज बीइंग गिवन एट द एज ऑफ 13, 14 years. And I remember that by the age of 16, 17 I was already earning. I had started understanding that what DJing is. अगर कोई gig मिल रहा है उस समय तो मैं वो करके थोड़े पैसे कमा लूं. And that is not the age. And I also understood that there are few aspects where a child cannot be parenting the parent. अब मुझे वो दिखता है कि जैसे ही 18 years का हुआ, मैं बाहर निकलना चालू कर दिया, मैंने पैसे कमाना चालू कर दिया, which was from 18 to 24, 25, right? अब आपकी जो उम्र है, now this is the phase 3. The phase 3 is of your adulthood. When you are adult, when you know what emotions are. Now just connect that कि जो बच्चे को स्पॉन्ज की तरह जिसने एब्जॉर्ब किया है उसको पता ही नहीं है कि इमोशंस शेयर करना राइट है या रॉन्ग है, उसके हिसाब से वो इमोशन एक्चुअली सप्रेस्ड है. वो ऑलरेडी सोचता है कि अगर मैं नहीं शेयर करूंगा इमोशंस को तो बेटर है. इफ आई ब्रश इट अंडर द कारपेट ऑल द इमोशंस, आई विल बी फाइन. नाउ यू गाइस कैन कनेक्ट दैट कि यू हैव सीन अ चाइल्ड हु हैज बीन लाइक
like a sponge who has absorbed all the emotions. And then when you are becoming, you know, a teenage, you have seen such things which you feel it's normal, and that is how life is. So your reality is now shaped already. Now when you go into adulthood and you meet people, you have girlfriends, you know, you want to explore life, is when you feel that it is okay. And that is what I did. I had multiple flings. I was completely normal to have, you know, multiple affairs. So मैंने वो कभी नोटिस किया ही नहीं कि जो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था वो एक्चुअली मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो मैं बिगड़ रहा था. मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये जिंदगी ऐसी ही चलनी चाहिए और ये जिंदगी ऐसी ही होती है. So none of these affairs or flings ask for emotional intimacy. Hence you get away with it? I think more Or you draw that line? more than that, because now you do not understand your own emotions कि आपके साथ क्या हो रहा है. You also attract, you बोलते ना कि you attract the same people Who you are. right? So you also attract those kind of people. They are also emotionally unavailable. For them enjoying life at edge and everything is there. तो वो emotional quotient कभी आता ही नहीं आपकी लाइफ में. Okay. So all of these things then culminated into you finally getting serious in life and getting married. Yeah. And these were your building blocks. So you were completely checked out from emotions. But you managed to woo me into marriage. Yeah. So what were you thinking at that point of time कि अभी थोड़ा सा इमोशन दिखा देता हूँ फिर बंद कर दूंगा, या फिर वो कैसा हो रहा था कि अभी थोड़ा चैनल कर लेता हूँ फिर बाद में नहीं आएगा? It's a very tricky part of the brain that you start using your brain in such a way to woo any person. You give them whatever it is there. You show love to them. You show pampering to them. You show that कि I will be available for you whatever happens. But then when you get married, I was like कि okay, I never realized that ये लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, ये मुझे समझना पड़ेगा, ये मुझे अनरावल करना पड़ेगा, ये मुझे समझना पड़ेगा कि जो मैंने बचपन में नहीं शेयर किया है, जो मैंने पैटर्न्स बनाए हैं अपने बचपन से लेके आज तक, वो सेम पैटर्न्स रिपीट होंगे. और वो जब रिपीट होने चालू हुए, आई वॉज बीन कॉर्नर्ड into my, like not cornered by you. You were asking for emotions. You were telling me that ki Karan, what is happening inside you? What is it that you are feeling? And I was not able to connect myself that okay, where are these emotions coming from? Why am I behaving like this? Why am I not sharing with you? Why am I not available to you? Whatever I'm feeling inside, why am I not able to share with you? Whether it is rage, whether it is anger, whether it is fury, whether it is anything, guilt, shame, jo bhi, frustration, stress, anxiety, all of these names are right now learning. तो मुझे वो लर्न करना पड़ा, मुझे वो समझना पड़ा कि यार मेरी बॉडी में मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे क्या इमोशंस है, वो सब लॉक्ड अप थे. और and at what age did you learn that? 32? नहीं, we got married when you were 30. No, we got, हाँ तो 30. You learned it after therapy. हाँ, मतलब मैं बोल रहा था कि मेरे जो इमोशंस को मैंने समझना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, थोड़ी सी अवेयरनेस बोलते हैं ना कि ये कुछ हो रहा है मेरे साथ, वो 32, 33 में आया मेरे पास. कैसे आया? वो भी जब तुमने पोक करना चालू किया मुझे कि ये ऐसा क्यों है, तू मुझे बता, तू मुझे ये कर. I know. So, जब तुमने मुझे बोलना चालू किया और मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यों इशू क्रिएट कर रही है जब कोई इशू है ही नहीं, ये क्यों इशू क्रिएट कर रही है when we are normally living happily ever after. But then what was missing here was that कि you know मुझे अपने इमोशंस को समझने के लिए डिग डीप करना पड़ा. मुझे मेरे वो 3 जो फेजेस थे लाइफ में उसमें जाना पड़ा और मुझे समझना पड़ा कि where is that I am going wrong, when was the time when I started suppressing my emotions, और जो point of views जो मैंने अपने अंदर बना रखे थे वो कब बनाए मैंने और वो कैसे चेंज कर सकता हूँ. I did a lot of inner child work. I did a lot of understanding that जो मेरा छोटा करण था उसको क्या चाहिए था. Then I started reparenting myself. Yeah. That is when I understood that oh okay, now I know who I am, and that is how I can share all of those things with you. Yeah, and I think it was a big part of your learning because तुमको ये बोला गया था कि ऑफिस जाना है, पैसे कमाना है, घर को प्रोवाइड करना है, and that's it. Yeah. So you are doing good. Yeah. So which is why you were coming into the relationship saying कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तो अच्छा क्योंकि ऐसा ही चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मैंने देखा है आसपास में, and ऐसे ही चल जाता है. Absolutely, yeah. So even me nagging you to be emotionally unavailable, even me trying to open you up was considered कि ये तो चलता है, Yeah. बीवियां तो यही करती है, ये तो होता ही रहता है. हर रिलेशनशिप में होता है. हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है. Thankfully you did not cross over to that level where you were
मेकिंग वाइफ जोक्स ऑन व्हाट्सएप कि ओ होम मिनिस्टर का फोन आ गया, अब तो बस बहुत बुरी प्रॉब्लम होने वाली है टाइप थिंग. थैंकफुली यू कुड सी दैट देयर वाज अ लाइन हियर कि दिस इज राइट एंड दिस इज क्रॉसिंग द लाइन टू लिविंग अ लाइफ लाइक दिस फॉर एवर. एंड यू चोज नॉट टू लिव लाइक दैट फॉर एवर. सो शो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोई छोटा बच्चा अपने इमोशंस अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहता है और उसको वो स्पेस नहीं दी जाती है, तो उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि अगर मुझे स्पेस नहीं दी जा रही है, दैट इज नॉर्मल, एंड ही थिंक्स दैट दैट इज द राइट थिंग टू डू बिकॉज माई पेरेंट्स आर ऑल्सो डूइंग. बट इन रियलिटी दैट इज रॉन्ग, बिकॉज उसको इमोशंस शेयर करने हैं, उसको बताना है कि मुझे क्या फील हो रहा है, उसको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने पेरेंट्स के सामने रखना होता है. और पेरेंट्स शट डाउन कर देते हैं. पेरेंट्स शट डाउन कर देते तो हैं. ही बिलीव्स दैट इट इज रॉन्ग. इट इज रॉन्ग, करेक्ट. तो टेक्निकली यहाँ पे क्या हुआ, जो सही था वो गलत बन गया और जो गलत था वो सही बन गया. So the rewiring technically shifted in the child's brain. Yeah. Correct. Now when that child has become an adult and he's getting married, the reverse things starts happening and they are not able to connect that. ओह अच्छा, मेरे को जो सिखाया गया था बचपन में, मेरे को फीलिंग शेयर करनी है, मेरे को फीलिंग शेयर करनी पड़ती है. तो वो एक वापस एक अंदर से पूरा काम करना पड़ता है अपने आप को. आपको रीपेरेंटिंग करना पड़ता है, आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालना पड़ता है, आपको उनके साथ बैठना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से मुझे शेप किया गया है, मेरे जो इमोशंस है वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं. ऑल ऑफ दोज थिंग्स इज व्हाट अ मैन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग. एंड इफ यू डू दैट and if you channelize that inside you in the right way, I think you have won yourself. That is when you become emotionally available. But I still don't have an answer to that, Karan, ki when you are in a relationship, were you pretending to be emotionally available, or it was like a short term goal in your mind ki abhi emotionally available ho jate, बाद में बंद कर देंगे switch. तभी ऐसा ही होता है कि लड़की पटानी है और हम लड़की आ जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगी. Again, one deep seated thing which was happening was that because I never knew about my emotions, right? I never knew about what was happening inside me. I was always wanting someone as my partner who will be emotionally available to me, but I will not be emotionally available to her. The whole idea is that कि मैंने तुमको अट्रैक्ट किया कि हाँ ठीक है, ये समझदार है, ये संभाल लेती है, इसको इमोशन समझने की आइडिया है, ये समझ लेगी मेरे को, सारी चीजें समझ लेगी. I also somewhere down the line attracted you and I got कि हाँ ठीक है, अच्छी लड़की है, सब कुछ संभाल लेगी, मेरा घर चल जाएगा, सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. So this is the thought process that every man has, right? कि एक बार शादी हो गई तो बस फिर ऑटो मोड में चल जाएंगे. No ये भी मैंने देखा था ना, ये भी मैंने देखा था कि because parents had a dysfunctional relationship, father was unavailable emotionally. तो for me this was also normal कि हाँ ठीक है, चल रही है ना जिंदगी, चलने देना, क्या दिमाग लगाना है. तो वो एक ऑटो मोड का जो कॉन्सेप्ट है इन एवरी मैन्स हेड दैट की जिंदगी चल जाती है, काम करना नहीं पड़ता है, उसको ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है. एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट ऑटो मोड टू consciousness. You have to understand that there is an awareness of emotions that goes on into every man and they need to understand what is happening with them. That is true. So yeah, thank you for throwing some light on it. I would also like to point out to a lot of you that being emotionally intelligent, being emotionally available is a skill. You can learn that at any point of time in your life. You can develop that at any point of time in your life. It doesn't need to be connected to कि oh look now my childhood was like this and this didn't happen, तो अब मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं तो अब मैं सीख ही नहीं सकता हूँ. It does not work like that. Karan is a living breathing example that how you can channel your emotions, how you can identify your emotions, how you can use them to create a better life for yourself. And there are a lot of ways emotional quotient helps you in life. It will also help you in becoming a better parent. It will also help you in becoming a better person at your workplace. Yeah. You will have a more rich, fulfilled life if you are emotionally intelligent, emotionally attuned, emotionally available. So please don't look at it as a weakness, guys. Please don't look at it that ki oh if a man is emotionally open then oh he's the simp. both of us said on the same time. So I think it's a superpower. Yeah. If any man is emotionally intelligent today, all he sees are women going crazy over him. So if you're a guy watching this, who do you want to be? The troll in the comment section saying that tu to simp hai, or the guy who actually has the attention of all the women around him? So that's a wrong thing to say. No, it's absolutely the right thing to say. Okay, I never knew that, but yeah. Why?
the troll will not have women's attention, right? Okay. The emotionally intelligent man, I am a girl, I am saying this. Yeah, okay. Anyway. I know that when I will be attracted to an emotionally intelligent man. Right. Okay. So up to you guys, totally up to you. I think so इमोशनली अवेलेबल होने से ना आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानने लग जाते हो. Yeah. वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अपार्ट फ्रॉम गर्ल्स व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड. आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था दैट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माय ओन वैल्यूज ऑफ लाइफ. आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट डिसीजंस आई कैन टेक इन द राइट मैनर. इट ऑल्सो चैनलाइज्ड माय एनर्जी एंड ऑल्सो व्हेन यू रीपेरेंट योरसेल्फ, व्हेन यू हील योरसेल्फ, व्हेन यू बिकम दिस पर्सन हु अंडरस्टैंड्स दोज नुआंसेस ऑफ योर लाइफ, you just evolve on daily basis. You are ready to be by yourself. So that is what I said. No, you are ready to upgrade. You have a more rich, fulfilled you empower life. your own soul. You empower yourself that oh shit, I can do so many things. I can learn so many things. I can channelize my energy. I can build so much for my own self, and I can build a wonderful life for myself. That is what I have learned by being emotionally available. I hope this step-by-step process of showing how you become emotionally unavailable helped you guys. Yeah. Okay, and if you have anything else that you want us to talk about, leave those comments here. Tell us what else do you want to hear our thoughts on, and if you want to connect with us one-on-one, then you can find the link in the description as well. If you are struggling with your relationship and you have always felt that you are an emotionally unavailable person, the link is mentioned in the description below. You can book a one-on-one call with us so that I can empower you, so that you can channelize your emotions in the right way and build a healthy life and an emotionally available life with your loved one. So we will see you next week with another episode of Happily Whatever After. Don't forget to like, share and subscribe. We are available on all social media platforms, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified every single time we release a new episode.